Good morning to all of you. So let us start with our 12th class topic. Topic is Kirchhoff's law. So Kirchhoff's scientist gave two law. So first law is known as Kirchhoff's current law, KCL, or you can say Kirchhoff's current law. So इसमें उन्होंने क्या बताया कि according to this law it states that the algebraic sum of all the currents meeting at a junction will be equal to 0. तो किसी भी जंक्शन पे सभी करंट की वैल्यू का सम जो होगा वो 0 होगा. और अलजेब्रिक का मीनिंग क्या है? इन सीक्वेंस. जैसे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहां पर क्या है, दिस इज जंक्शन. ये क्या है, यहां पर जंक्शन है. दिस पॉइंट इज जंक्शन. तो टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल. लाइक वी आर residing in Haryana. So Ambala is a junction, Ambala Cant is a junction. So from this junction a lot of trains are coming and going. So some trains are going from Ambala to Chandigarh, some trains are going from Ambala Cant to Delhi, some trains are going from Ambala Cant to UP, some are going to Uttarakhand, some are going to Punjab as well as Rajasthan. So it means this is a particular point from where we are having a availability of trains which we can board. Okay, so junction क्या है कि वो point जहां पर आपके सभी करंट आकर मिल सकते हैं. मीटिंग पॉइंट, ठीक है, जहां पर बैठ के हम इकट्ठे मीटिंग कर सकते हैं. तो हम बात कर रहे हैं किरचॉफ लॉ की. तो किरचॉफ साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए. पहला लॉ दिया किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल उसको हम बोलते हैं. तो कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं एक्सप्लेन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इट कैन बी आस्क्ड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ. सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ मींस किरचॉफ्स करंट लॉ, मींस द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग द करंट लॉ, कि आपको करंट के बारे में बताना है कि क्या लॉ किरचॉफ साइंटिस्ट ने दिया. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of all the currents meeting at a junction will be equal to 0. so now अब चलिए ठीक है, लो दे दिया. अब इस लो को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाए वो भी एक प्रॉब्लम है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहां पर हमने जंक्शन बनाया, ये जंक्शन पॉइंट है. इस जंक्शन पे आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ करंट्स आर कमिंग एंड गोइंग, मींस कमिंग टुवर्ड द जंक्शन एंड कमिंग टुवर्ड द जंक्शन एंड गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. कुछ करंट इसमें ऐसे हैं जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ करंट ऐसे हैं जो जंक्शन की तरफ अंदर आ रहे हैं. ठीक, अब इन करंट्स को मिलाकर इक्वेशन किस तरह से लिखी जाए, उसके लिए हमें चाहिए कन्वेंशंस कि व्हाट शुड बी डायरेक्शन, कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से ली जाए कि हम एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकें जिससे कि हम कहीं भी केसीएल लगा सकें. ठीक है, तो देखिए, तो कन्वेंशन में क्या है कि लेट अस अज्यूम, देखिए जो कन्वेंशंस होती हैं वो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं कि ऑल द इनकमिंग करंट्स, जो भी करंट मेरे जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं. ठीक, ऑल द करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव. ठीक, पहली चीज क्या है, जितने भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव. लेट अस अज्यूम इन दिस डायग्राम we can observe that I1 is coming towards junction, I3 is coming towards junction, I5 is coming towards junction, I7 is coming towards the junction. Okay, means I1, I3, I5, I7, these four currents are coming towards the junction. means ये चार करंट ऐसे हैं इस डायग्राम में जो कि जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, means these are the incoming currents and rest of the currents I2, I4, I6, I8, these are the currents which are going away from junction. means इसमें से I1, I3, I5, I7 क्या है, वो करंट है जो आपके जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और I2, I4, I6, I8 क्या है, जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं. तो हमने क्या एज्यूम किया, कन्वेंशन क्या है कि जितने भी इनकमिंग करंट हैं उनको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और जितने भी आउटगोइंग करंट हैं उनको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं. तो अब लो क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स. अब वो जो हमने करंट का सम करना है
उसमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इनकमिंग करंट को लेना है पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को लेना है नेगेटिव। और ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का मतलब क्या है कि किसी भी जंक्शन से, किसी भी मीटिंग पॉइंट से, मान लो हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे कितने करंट आ रहे हैं और कितने करंट जा रहे हैं, मींस द नंबर ऑफ करंट्स गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड कमिंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए I1 is positive, I2 is negative, I3 is positive, I4 is negative, I5 is positive, I6 is negative, I7 is positive, I8 is negative. It means we can say that according to this law we can write the mathematical equation for Kirchhoff's current law. So I1 minus I2, I1 minus I2 plus I3 incoming minus I4 outgoing plus I5 incoming minus I6 outgoing plus I7 incoming minus I8 outgoing will be equal to 0. Okay, so according to the statement given by Kirchhoff's current law, that algebraic sum of all the current coming, all the currents at a junction, जितने भी करंट जंक्शन पर मिल रहे हैं, चाहे वो करंट जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो करंट जंक्शन से की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 प्लस I7 माइनस I8। तो यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम कि जितने भी करंट नेगेटिव हैं वो सभी करंट वो हैं जो इस जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, जितने भी करंट पॉजिटिव हैं ये वो करंट हैं जो इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। सो जो माइनस वाले हैं वो मैंने उधर ले गया, तो क्या बन गया, I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7। इफ यू ऑब्जर्व दीज फोर करंट I1, I3, I5, I7, these are the incoming currents. It means we can say that the sum of incoming currents will be equal to sum of outgoing currents. The sum of incoming currents will be equal to sum of outgoing currents. Clear? So this is the basic rule for application of Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Okay? So let us understand it with an example. Suppose we are having a diagram. Suppose it is 2 ampere, it is 3 ampere, this current we have to find, this current we have to find. Okay, so let us take this example. So in this example, this is the first junction, ये first junction है, this is second junction, this is third junction, ठीक है।
तो देखिए ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर आ रहा है, तो मीन्स 1 + 2। हमें पता है कि किसी भी जंक्शन पर जितने भी इनकमिंग करंट होंगे उनका सम क्या होगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। सो 1 एम्पियर इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, सो इनकमिंग करंट आर पॉजिटिव, 1 + 2 इज इक्वल टू, दिस इज द so at this junction all the three currents are incoming, so 1 + 2 + 3, this current will be equal to how much, 6 ampere, so it is 6 ampere. Fine. So sum of all the incoming currents at first junction 2 + 1 + 3 will be equal to 6 ampere. Fine. Come on to second junction. At second junction 6 ampere is the current towards the junction, 2 ampere outward means outgoing current, so 2 + 3, तो क्या होगा at second junction, ये फर्स्ट जंक्शन पे, सेकंड जंक्शन पे क्या होगा, 6 एम्पियर will be equal to 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस ये निकालना है, लेट इट इज x एम्पियर, तो क्या आ जाएगा, x will be equal to 6 - 2 + 3, that is x equal to 1 एम्पियर आ गया, x is equal to 1 एम्पियर. So this is your 1 ampere. Fine. It is 1 ampere. So now from 1 ampere 0.1 ampere is going here. It means this 1 ampere is divided in two parts. 0.1 ये होगा तो कितना हो जाएगा, 0.9 ampere. How? So 1 ampere, 1 will be equal to 0.1 plus y. Y is unknown current. Okay. So y is how much? 1 minus 0.1, that is 0.9 ampere. So y is how much? 0.9 ampere. So this 0.9 is coming towards this fourth junction. ये तो 0.9 एम्पियर है, ये फोर्थ जंक्शन में जा रहा है, और 0.2 एम्पियर बाहर आ रहा है, 0.3 बाहर आ रहा है, यहां पर कितना होगा, तो एट फोर्थ जंक्शन, जंक्शन नंबर 4 कितना होगा, 0.9 will be equal to 0.2 plus, let it be z plus 0.3, so z will be equal to 0.9 minus 0.2 plus 0.3, that is 0.4, so z will be equal to 0.4 ampere. Clear? So at the first junction 1 ampere is the incoming current, 2 ampere is the incoming current, 3 ampere is the incoming current, so these three current will become together give 6 ampere, because incoming current का सम क्या होगा, outgoing current के equal होगा. ठीक, 6 एम्पियर करंट यहां पर आया, इस जंक्शन पे 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर इधर आ रहा है, इट मींस this 6 ampere will be equal to sum of this incoming current and this, so this will be 3 plus 2 5, the rest will be 1 ampere. It means 1 ampere current is the value here. So now this 2 ampere is further incoming current for this junction, so 0.3 ampere इधर जा रहा है, 0.1 इधर जा रहा है, so it will be how much, 0.3 plus 0.1 0.4, so this will be how much, 0.6 ampere. So 2 एम्पियर में से 0.3 0.1 मीन 0.4 एम्पियर यहां जा रहा है, एंड कितना करंट चाहिए 2 एम्पियर के लिए, 0.6 एम्पियर करंट हमें रिक्वायर्ड है, जो कि मिलकर क्या देगा 2 एम्पियर, तो मींस तब जाके यहां पर केसीएल सेटिस्फाई होगा. 1 एम्पियर जब इस सेक्शन में जा रहा है तो 0.1 एम्पियर तो ये जा रहा है, ठीक है, और 0.9 ये हो गया. अब 0.9 जब इस सेक्शन में जाएगा, 0.3 यहां पर है, 0.2 यहां पर है, 0.3 0.2 0.5, इट विल बी 0.4 एम्पियर. क्लियर? So this is your KCL, Kirchhoff's current law. Okay, so this is the explanation of Kirchhoff's current law. In the circuit, electric circuit, you can apply easily the Kirchhoff's current law and can find the value of the current coming from junction or going towards the junction. Okay, thank you so much.